Hello students, a warm welcome and a very good evening to each one of you. Welcome to the English Funda channel. I welcome you all to another session of the CDS 2022 Grand Marathon on the YouTube channel. So फटाफट सभी लोग join कर लें quickly join in everyone. Share the session को ज़्यादा share कर दो with your friends, colleagues, fellow aspirants so that they can benefit. So उम्मीद करता हूँ सभी लोग का प्रेपरेशन अच्छा चल रहा है. कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो डू नॉट फॉरगेट टू आस्क मी, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी, ओके. एंड टुमारो इज़ योर पेपर, सो आई होप एवरीवन इज़ वेल प्रिपेयर्ड. बिफोर द पेपर, दिस विल बी द लास्ट सेशन बिफोर द पेपर. मैराथन का लास्ट सेशन है आज, तो ध्यान दीजिएगा. आई हैव ब्रॉट अ मिक्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैब क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं इस सेशन को. फटाफट सेशन को शेयर कर दें, लेट अदर्स नो. सो ग्रैंड मैराथन, चैलेंज योरसेल्व्स. Let me know how well you're prepared. Your book is ready. First of all, let me tell you that. I already told you yesterday as well. Book के बारे में मैं आपको बताऊंगा. But before that, let me tell you, we are going to take up the analysis for the CDS 2 English paper. Analysis. The analysis will be accurate and the expected cutoff will be disclosed tomorrow. ओके, दिस विल बी अ रिकॉर्डेड सेशन. क्यों इसे रिकॉर्डेड कर रहे हैं? क्योंकि लाइव सेशन में बहुत टाइम लगता है. आपके क्वेश्चंस आते हैं, हमारे आते हैं, डाउट्स आते हैं. तो मैं क्या चाह रहा था कि मैं पूरे पेपर का एनालिसिस फटाफट रिकॉर्ड करके विथ एक्सप्लेनेशंस डाल दूं. 3 बजे ये प्रीमियर होगा कल. टुमारो 3 PM, which is the 4th of September 2023, it will premiere on the English Funda channel. तो सब लोग ऑब्वियसली पेपर के बाद बहुत थोड़े से हड़बड़ी में रहते हैं कि सर आंसर बता दो बस, आंसर बता दो बस. यू ऑलरेडी टायर्ड आफ्टर टेकिंग द पेपर. तो इसलिए मैं इसे रिकॉर्डेड सेशन में आपको प्रेजेंट करूंगा कल. एक बार पेपर दे के आओ, अच्छे से दे के आओ, उसके बाद हम इस एनालिसिस को रिकॉर्ड करके इसे अपलोड कर देंगे एट 3 o'clock. ठीक है. सो एनालिसिस विल बी by Vinod sir and I. We both will do the analysis. Vinod sir and I will do the analysis. Will be from both of us. Okay. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए एंड लेट योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, फेलो एस्पिरेंट्स नो अबाउट द सेशन. बुक के बारे में, द वेट इज ओवर. द बुक हैज बीन लॉन्च्ड. द नेम ऑफ द बुक इज ग्रामर बाय लॉजिक. Yes, people who are appearing for tomorrow's session, tomorrow's paper, it's a bit late for you to purchase the book, but if you are preparing for the next season of the CDS exams, you can purchase this book. It is very comprehensive in nature, to the point, concepts and questions are there. So download the English Funda app to buy the book and get a free subscription to the video recorded course as well. The link is there in the description below. Okay, so ready everyone? Let's move on to the first question of the day. It says find the correct combination. Obviously आपको क्या करना है? आपको sequence identify करना है. You have to identify the sequence of these words. What should be the sequence? Okay. Now sentence number 1 is given. A sandstorm usually arrives suddenly in the form of advancing wall and dust and debris, which may be miles long and several thousand feet high. S6, last sentence we fixed here, but the actions a motorist takes during the storm may not be most important of his or her life. PQRS are jumbled. You have to rearrange them and tell me which should be the order here. So your time starts now. आराम से solve करिए and let me know क्या इसका sequence होना चाहिए. Oh. I don't know what's happened to the video. Just a minute, guys.
seems to be okay now. Okay, so what do you think should be the order of this particular question? फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है गाइस, उसके बाद सीक्वेंस देखो क्या होना चाहिए सीक्वेंस. ओके, आई हैव गॉट अ फ्यू आंसर्स गाइस. PQRS के क्वेश्चंस हैं, कई लोग PQRS के क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, बट ट्रस्ट मी दीज आर द इजीएस्ट ऑफ द लॉट. इफ यू थिंक केयरफुली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन सच क्वेश्चंस. यहाँ पे कह रहा है सैंडस्टॉर्म यूजुअली अराइव्स सडनली इन द फॉर्म ऑफ एन एडवांसिंग वॉल ऑफ डस्ट एंड डेब्री विच मे बी माइल्स लॉन्ग एंड सेवरल थाउजेंड फीट हाई. इसके बाद क्या आना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन. So which sentence do you think should come first after this particular question? Okay, यहाँ पे कह रहा है sandstorms usually last only a few minutes. क्यों कह रहा है? That may involve chain collisions creating massive pileups. R कह रहा है blinding choking dust can quickly reduce visibility causing accidents. They strike with little warning making driving conditions hazardous. सो यहां पे अगर देखोगे कंपल्सरी पेयर्स, मैं बोलूंगा R एंड Q इज अ कंपल्सरी पेयर. R Q कंपल्सरी पेयर है. क्यों? क्योंकि मैं प्रिटी श्योरली बता सकता हूं R के बाद Q आने के चांसेस ज्यादा हैं. जैसे R में कह रहा है ब्लाइंडिंग चोकिंग डस्ट कैन क्विकली रिड्यूस विजिबिलिटी कॉजिंग एक्सीडेंट्स. उसके बाद Q कह रहा है दैट में इन्वॉल्व चेन कोलिजन्स क्रिएटिंग मैसिव पाइलअप्स. जैसे ही डस्ट इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको बिल्कुल ब्लाइंड कर दे, आपको कुछ दिखे ही ना, उसके कारण क्या होने लगता है? चेन कोलिजन्स होने लगते हैं. तो आर क्यू इज अ कंपल्सरी पेयर. कितने ऑप्शन में आर क्यू एक साथ आ रहा है? एक में आ रहा है. तो एक बार इस सीक्वेंस को पढ़ के देख लीजिए. ओके, एस कह रहा है दे स्ट्राइक विद लिटिल वार्निंग मेकिंग ड्राइविंग कंडीशंस हजार्डस. उसके बाद आर ब्लाइंडिंग चोकिंग डस्ट कैन क्विकली रिड्यूस. उसके बाद क्यू दैट मे इन्वॉल्व चेन कोलिजन्स. और P, sandstorms usually last only a few minutes, but the actions motorist takes during the storm may be most important of his or her life. QP, SRQP अगर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए? B, yes, you can go with B, but इसमें मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि हम a sandstorm लिखा है ना, so it's better यहाँ पे it होता. It strikes with little warning. That could be a better option here. तो दे के बजाय इट होता तो बेटर रहता. बट यस, बी शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस. SRQP जिसने भी कहा बिल्कुल सही है. यस, कंपल्सरी पेयर के हिसाब से हमने सही आंसर पे हम आ गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन S1 इज फिक्स्ड, S6 इज फिक्स्ड. ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी व्हाट शुड बी द सीक्वेंस. कई बार कंपल्सरी पेयर्स जैसे आप देखते हो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो. कई बार आपको फर्स्ट सेंटेंस पकड़ में आ जाता है, या कई बार लास्ट लिंकिंग सेंटेंस पकड़ में आ जाता है. सो उन सभी को देख के अकॉर्डिंगली रीअरेंज करिए. S6 में बट क्यों आया? क्योंकि S6 में ये कह रहा है सैंडस्टॉर्म्स यूजुअली लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनट्स के लिए होते हैं, लेकिन बट द एक्शन मोटरिस्ट टेक्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म में बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हिज और हर. ये कहना चाह रहा है कुछ ही मिनट्स के लिए होते हैं, लेकिन जो भी एक्शन मोटरिस्ट लेता है
वो उसके जान के लिए काफ़ी, मतलब हो सकता है उसकी जान बचे या जाए, उसके एक्शन पे डिपेंड करता है। भले वो कुछ मिनट ही रहता है तब भी, लेकिन मोटरिस्ट के एक्शन उसको बचा सकता है। दैट्स द मीनिंग, इसलिए SRQP शुड बी द वन। ओके, इसको बताओ, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? ऐसे स्टोरीज वाले काफ़ी आसान हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ही, ये ही किसके लिए है ये सोचो, एंड क्या सीक्वेंस होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्रोनोलॉजी ऑफ द रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखोगे तो आसानी से आप रीअरेंज कर सकते हो। S1 कह रहा है माउस एंड फ्रॉग वर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आएगा? ओके, कई लोगों के आंसर ऑलरेडी आ गए। बिस्वा रंजन कह रहे हैं क्यू आर का पैर बन रहा है, क्यू और आर का पैर बन रहा है, ये आप कह रहे हो। क्यू कह रहा है एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड हॉप आउट ऑफ हिज पॉन्ड एंड गो टू विजिट हिज फ्रेंड हु लिव नियर अ होल इन द साइड ऑफ अ ट्री। उसके बाद आप कह रहे हो आर द रीजन द फ्रॉग फेल्ट स्लाइटेड बिकॉज दो ही विजिटेड द माउस एवरी डे द माउस ऑन हिज पार्ट हैड नेवर मेड एन अटेम्प्ट टू विजिट हिम। तो क्यू आर अगर बन रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? PQRS, मतलब सेम सीक्वेंस आपको लगता है बिस्वा? ओके, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं ए शुड बी द आंसर। जरा ए को देख लें। अ माउस एंड फ्रॉग वर फ्रेंड्स, क्यों कह रहा है एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड हॉप आउट ऑफ हिज पॉन्ड गो टू विजिट हिज फ्रेंड हु लिव्ड इन अ होल इन द साइड ऑफ अ ट्री। उसके बाद एस, ही वुड रिटर्न होम एट नून। बिल्कुल, वो जाता था मिलने और शाम में घर आ जाता, सॉरी दोपहर में घर आ जाता था। उसके बाद पी, द माउस डिलाइटेड इन हिज फ्रेंड्स कंपनी अनअवेयर दैट द फ्रेंड वॉज स्लोली टर्निंग इन टू एन एनिमी। द माउस डिलाइटेड नहीं, वॉज डिलाइटेड इज बेटर, वॉज डिलाइटेड इन हिज फ्रेंड्स कंपनी, काफ़ी खुश था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका जो फ्रेंड है वो धीरे धीरे एनिमी बन रहा था। उसके बाद आर, द रीजन द फ्रॉग फेल्ट स्लाइटेड because though he visited the mouse every day, the mouse on his part had never made an attempt to visit him. Okay? तो फ्रॉग को ऐसा लगा कि मैं तो मिलने जाता हूं रोज, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आता। ओके, माउस मुझसे मिलने नहीं आता। So one day he felt he had been humiliated enough. When it was time for him to take leave of the mouse, he tied one end of a string around his leg, tied the other one to the mouse's tail, and hopped away, dragging the hapless mouse behind him. So yes, the correct answer should be QSPR according to the sequence, chronology के हिसाब से। QSPR is absolutely right. Okay, Q is the only possible link to S1. तो Q obviously पहले आना चाहिए, S उसके बाद आना चाहिए. So that is a compulsory pair. So A is right. Next question. ध्यान से पढ़िए. Tell me what should be the order. ऐसे क्वेश्चंस में गाइस टाइम लगते हैं. टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी. ध्यान से पढ़ के आइडेंटिफाई करो सीक्वेंस. ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है. क्वेश्चंस में फोकस करो. ट्राई एंड आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. यू शुड बी एबल टू गेट टू द करेक्ट आंसर है. South India has always been highly dependent on the monsoon, which is uncertain and risky. S6 कह रहा है, unfortunately the number of bad years is only going to worsen. So S1 के बाद क्या आना चाहिए? Over the past few decades, the southwest monsoon has become unpredictable and reduced in intensity. Q कह रहा है, in good years when the river receives enough rainfall, there is no discord between the two states. यहाँ पे the river लिखा है और यहाँ पे द टू स्टेट्स लिखा है, तो ऑब्वियसली इसके पहले किसी रिवर की बात की जा रही होगी या किसी स्टेट्स की बात भी की जा रही होगी. आर कह रहा है, व्हाट डज दिस मीन फॉर द कावेरी? द अमाउंट ऑफ वाटर द रिवर रिसीव्स ड्यूरिंग द समर रेन्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनरिलायबल.
और एस कह रहा है इन बैड ईयर्स लाइक द वन वी आर फेसिंग नाउ इट टर्न्स इनटू अ गारगैंटुअन पॉलिटिकल क्राइसिस. ओके, और उसके के बाद कह रहा है अनफॉर्चुनेटली द नंबर ऑफ बैड ईयर्स आर ओनली गोइंग टू वर्सन. वो तो लास्ट वाला है, दैट इज S6. ओके, दैट इज S6. सो आपको ये सोचना है इट हैज बीन विच इज अनसर्टेन एंड रिस्की. व्हाई इज इट रिस्की? दैट्स द क्वेश्चन. बताओ, सोच के बताओ. कंपलसरी पैर पकड़ पाए आप? कंपलसरी पैर का मैं आपको हिंट देता हूं. यहां पे क्या लिखा है? द रिवर. और यहां पे क्या लिखा है? द कावेरी. सो ऑलरेडी नो दैट द कावेरी इज अ रिवर. सो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट द कंपलसरी पैर. कंपलसरी पैर क्या होगा बताओ. ओके, आर में जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो आप कह रहे हो पी में मेंशन्ड है. R is a question. What does this mean for the Kaveri? The amount of water increasingly the river receives during the summer rains is becoming increasingly unreliable. ठीक है? So, what should be the order? आप सोच के बताओ. Gargantuan is something which is extremely big. Yes, again the answer should be A, guys. PRQS, absolutely right. अब ध्यान दीजिए कैसे sequence बना. South India has always been highly dependent on monsoon, which is uncertain and risky. उसके बाद you put P. Over the past few decades, the southwest monsoon. क्यों risky था वो चीज? Why is the monsoon which is uncertain risky? उसका explanation P में दे रहा है. So that is an idea or thought is being introduced. Over the past few decades, the southwest monsoon has become unpredictable and has reduced in intensity. उसके बाद R. What does this mean? अगर southwest monsoon intensity में कम हो रहा है तो what does this mean for the Kaveri river? The amount of water the river receives during the summer rains is becoming increasingly unreliable. Unreliable होता जा रहा है. Then Q. In good years, when the river receives enough rainfall, there is no discord between the two states. Obviously, you must be aware there is a discord between Tamil Nadu and Kerala regarding the water of the river Kaveri, है ना. लेकिन गुड ईयर्स में जब सफिशिएंट रेनफॉल होता है, कोई भी इनके बीच में किसी प्रकार का डिस्कॉर्ड नहीं होता. ओके, व्हेन देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल. जिस बार रेनफॉल नहीं होता, दोज आर द ईयर्स व्हेन देयर इज डिस्कॉर्ड और डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स. और लास्ट में एस. इन बैड ईयर्स लाइक द वन वी आर फेसिंग नाउ इट टर्न्स इनटू अ गारगैंटुअन पॉलिटिकल स्ट्राइक. बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाता है. ओके, एंड लास्ट में अनफॉर्चुनेटली द नंबर ऑफ बैड ईयर्स इज ओनली गोइंग टू वर्सन. नंबर ऑफ बैड ईयर्स धीरे धीरे कम ही होने वाला है, ऑब्वियसली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. Right, so let's move on to the next question. ध्यान से पढ़ो and tell me what should be the order. Discord is a fight, a quarrel, absolutely. People who are joining in late, guys, share the session. ये क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. जितने ग्रामर के वोकैब के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उतने इंपॉर्टेंट ये भी हैं. In order to clear the cutoff, you have to solve PQRS, reading comprehension, cloze test. So वो सारी चीज़ें आज मैं लेके आया हूँ. आराम से सॉल्व करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है. आई एम देयर विथ यू टू गिव यू हिंट्स एज वेल. बताओ, what should be the order of this particular question? Palau is an island country. Palau, an island country, has become the first country to ban many kinds of sunscreen. उसके बाद क्या होना चाहिए?
यहाँ पे वॉशेस नहीं, वॉश होना चाहिए था. Okay, what should be the order? Pretty simple one, guys. Palau, an island country, has become the first country to ban many kinds of sunscreen. Okay, why is it banning sunscreen? तो वहां पे पहला आंसर होना चाहिए, पहला सेंटेंस होना चाहिए, इन अ मूव टू प्रोटेक्ट इट्स कोरल रीव्स फ्रॉम केमिकल्स. Why is it banned? Why has it banned the sunscreen? In a move to protect the coral reefs from chemicals. उसके बाद क्या आएगा? There is growing evidence that chemicals from sunscreen, full stop तो नहीं आएगा, which wash off swimmers or enter the ocean through sewer system harm the reef. There is growing evidence. Okay, there's growing evidence that chemicals from sunscreen which wash off. नहीं, यहाँ पे washes is okay. Washes is okay क्योंकि ये सनस्क्रीन के लिए ही लिखा है, तो washes ही लिखा जाएगा. Washes of swimmers or enters the ocean through sewer system harm to, तो हटा दो, harm the reef. ठीक है. उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद S, the role of two ingredients of sunscreen called oxybenzone and oxynoxate stunts coral growth and is toxic for algae that live within the reefs. So yes, C is absolutely right. Most of you hit the jackpot. Absolutely correct. So yes, C is the answer to this question. कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस में गाइस? इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेल, और अगर सेंटेंस में कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर पाते हो, तो इट रियली बिकम्स इजी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगले वाले पे चलते हैं. हियर इज द वन. यहाँ पे नथिंग इज फिक्स्ड. S1 S5 फिक्स्ड नहीं है. All the sentences are jumbled. You have to rearrange them and put them in order. What should be the order? बताओ. Okay. Obviously, the first sentence should be okay. B कह रहे हो कई लोग. Let's see. The correct answer is indeed B. RSPQ is correct. Music is such a sanct, personal, pure thing. उसके बाद S, it goes far beyond. यहाँ पे it लिखा है तो obviously R and S is a compulsory pair. It has been written for music. It goes far beyond songs and earphones and iPods and phones. Excuse me. उसके बाद P, there are some important things which can enhance your music listening experience. Okay, important things. More than 75 earphone brands suggest that of these important things is comply foam tricks which can do the trick as well. So RSPQ is absolutely right. B is correct. Okay, now guys बता दूं और एक अच्छी खबर है for people who are preparing for the next CDS season. A new batch for CDS 2023 जहाँ पे live sessions
अभी तक हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं, सो वील बी स्टार्टिंग लाइव सेशंस सून. ओके, इट्स लॉन्चिंग ऑन द 12th of September 2022. 12 सितंबर को लॉन्च होगा एंड इट विल एंड ऑन द 15th of February 2023. सो ऑब्वियसली आपका पेपर अप्रैल में होगा. बिफोर दैट वील एंड द सेशन. दिस इज द फी विच इज 7500. The discounted fee is 4999 only. These are live classes, not recorded sessions. Will be taken by both Vinod sir and me. Will be taken by both Vinod sir and me. Okay, live sessions. So if you want to enroll, you can download the app. You get the course link over there, और वहाँ पे आप जाके enroll कर सकते हो. Okay, let's move on. इसके अलावा बता दूं, संदीप सर के भी आपके करंट अफेयर्स के सेशंस वो ले रहे हैं. डाउनलोड द ऐप एंड अटेंड सर्स क्लासेस. ओके, यू ऑलरेडी नो सर्स क्वालिफिकेशंस. ही टीचेस वेरी वेल, सो यू कैन एक्चुअली डाउनलोड द ऐप, फॉलो हिज क्लासेस. द ऐप नेम इज टीम निष्ठा. डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. These are his handles of Instagram, Twitter, Gmail, and you can actually get your PDFs here as well on this particular link. So download and follow his classes. Will be really effective. Okay, ये भी बता दूं, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, उनका एनालिसिस सर कल 9 बजे लेके आने वाले हैं. टुमारो 9 o'clock Sandeep Bansal Sir will be there on his YouTube channel, okay, with the analysis of the general awareness paper. इंग्लिश का तो मैं 3 बजे आपको दे दूंगा, बट जनरल अवेयरनेस का 9 बजे आपको, जनरल स्टडीज का 9 बजे जो है वो आप सर आके लाइव एनालिसिस लेंगे. मैं तो आपको रिकॉर्डेड में 3 बजे ही दे दूंगा, तो फटाफट देख लीजिएगा उसे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 and S6 is fixed. Read carefully and tell me what should be the order. Aarti, we are not planning to have more than 40 students in one batch. Okay, not more than 40 students in one batch, because we can pay attention to each and every query of the students. GS will be taken by Sandeep sir tomorrow. Okay, जनरल स्टडीज के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं पेपर वाले, वो आपको संदीप सर कल 9 बजे लेंगे लाइव. Lokesh, Joel Lokesh, there are some things that cannot be disclosed on a public platform. So that's the reason I choose not to disclose why I quit Byju's. Okay, because there could be multiple reasons. So the reasons cannot be disclosed. Okay, so that's the reason I'm not disclosing. But yes, I'm there to support and help you and teach you. That's what matters. So please follow me on this channel regularly. That will really help you. Okay, what should be the order for this one? Okay, some of you already gave me with the answer. Yeah, Joel Lokesh, you already got the answer there. Okay, what should be the order for this one? Biodiversity is the amount of variety of life on Earth. What should you put after that? Healthy ecosystems and health-rich biodiversity contribute to climate stability. It is the number of different species of plants, animals, and microorganisms. Along with helping in speedy recovery, it also promote soil formation and protection. It also helps in speedy recovery from natural disaster. So what should be the order? Okay. Now guys, if you notice, यहाँ पे it जो आ रहा है, ये एक pronoun है. ये it किसी न किसी चीज़ के लिए लिखा गया. Pronouns will always point towards a noun that has already been introduced. यहाँ पे भी it है, यहाँ पे भी it है.
सो इन दोनों में से कोई एक पहले आना चाहिए, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, तो या तो क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा। शुड आई पुट क्यू और शुड आई पुट एस? सो एस में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहां पे ऑल्सो लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो इज रिटन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेकेंडरी आइडिया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तभी आप ऑल्सो लिख सकते हो। तो यहां पे इट्स बेटर टू पुट क्यू। बायोडाइवर्सिटी इज द अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कितने ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहे हैं? एक ही शुरू हो रहा है, तो इस ऑर्डर को एक बार पढ़ के देख लो। पी क्या कह रहा है? हेल्दी इकोसिस्टम्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, QP। Then S, it also helps in speedy recovery from natural disasters. And then R, along with helping in speedy recovery, यहाँ पे speedy recovery की बात कर रहे हैं, इसके अलावा, so along with helping in speedy recovery, so ये भी link है। S and R is also a compulsory pair. It also promotes soil formation and protection. And last में, it is known to aid in breaking down pollutants. So yes, QPSR, whosoever said A was absolutely right. A is the correct answer. Next question for you. Here goes. PQRS, एक भी sentence fixed नहीं है. All are jumbled. Read it and tell me what should be the order. Try to identify the compulsory pairs. Try to identify the compulsory pair. P में क्या लिखा है देखो, olive oil is one such ingredient from the kitchen which will be the best for oiling every kind of scalp. क्यों कह रहा है? While staying home, many people look for more natural ways to take care of their hair. Or the right concoction for the hair is maintaining hygiene, eating well, staying active and using just the right kind of products. S, a good option is to oil massage their roots and figure out what works for them. यहाँ पे लिखा है their roots. So what should be the order? Okay, guys, let me tell you the compulsory pair should be S and P. A good option is to oil massage their roots and figure out what works best for them. Olive oil is one such ingredient from the kitchen which will be the best for oiling every kind of scalp. Okay, so S and P is a compulsory pair. कितने ऑप्शन में एस पी एक साथ आ रहे हैं? एक ही में। तो इस ऑप्शन को पढ़ के देखो। आर कह रहा है द राइट कॉन्कॉक्शन फॉर द हेयर इज मेंटेनिंग हाइजीन, ईटिंग वेल, स्टेइंग एक्टिव एंड यूजिंग जस्ट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, यूजिंग जस्ट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. देन क्यू, व्हाइल स्टेइंग होम मेनी पीपल लुक फॉर मोर नेचुरल वेज टू टेक केयर ऑफ देयर हेयर. उसके बाद अ गुड ऑप्शन इज टू ऑयल मसाज देयर रूट्स एंड फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर देम. Lastly, olive oil is one such ingredient from the kitchen. So yes, we go with A. RQSP should be the correct answer. Okay, because S and P is a compulsory pair and not S and R. इसलिए we are not going with B as well. So A is right. Good. Okay, next question. ध्यान से पढ़ो. Again, no sentence is fixed. All are jumbled. What should be the order? यहाँ पे लिखा है दे रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स अदर देन देमसेल्व्स सच एज ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया. यहाँ लिखा है बट नो वर्ड्स डू ओनली, बट वर्ड्स डू नॉट ओनली साउंड, दे ऑल्सो हैव मीनिंग. बट का मतलब इसके पहले कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए.
and the writer must be concerned with the effect produced by the sounds he uses. Music, like literature, is an art that deals with sound. Literature makes use of words which are sounds. So what should be the order? क्या होना चाहिए order? Pretty simple one. If you identify all 4 sentences, तो आपको strongly पता लगेगा कि P से शुरू नहीं हो सकता, Q से शुरू नहीं हो सकता. P से क्यों नहीं हो सकता? Because it's starting with a pronoun. It cannot start with Q because you have a conjunction. It cannot start with R because you have a conjunction. Conjunctions always join 2 sentences. So you're sure it will start with S. Music, like literature, is an art that deals with sound. Literature makes use of words which are sound. So C and D I eliminate. बचा आपके पास A and B. So S R तो दोनों में common है, तो you're sure कि S के बाद R आना चाहिए. But R के बाद क्या Q आएगा या P? That's a question. So R के बाद Q इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है but words do not only sound, they also have meaning. The writer must be concerned with the effect produced by the sounds he uses. But words do not only sound, they also have meanings. And यहाँ पे भी they लिखा है. They refer to specific things. Words की बात कर रहे हैं. Specific things rather than themselves, such as objects and ideas. So yes, absolutely we go with B, S, R, Q, P is the one. Well done, people. Next question. Here goes. S1 and S6 is fixed here. First sentence, last sentence fixed. Just like a story. Read it, identify what should be the order. सीक्वेंस, कई बार लास्ट सेंटेंस में भी आपको लिंक समझ में आ जाता है. लास्ट सेंटेंस में भी लिंक समझ में आ जाता है. ओके, सो सोच समझ के बताइए व्हाट शुड बी द ऑर्डर. कौन सा सेंटेंस लास्ट में आएगा? कौन सा सेंटेंस लास्ट में आना चाहिए? Are you able to figure out the last one? You'll get some hint at least. Some of you are already answering. विद्यासागर, एब्सोल्युटली द लास्ट सेंटेंस इज आर. लेकिन आर के कारण आप आंसर पे तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि 3 ऑप्शन में लास्ट में आर है. वाई वी चोज आर एज द लास्ट सेंटेंस? बिकॉज आर में कह रहा है द होल विलेज गैदर्ड टुगेदर, द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू हिम. उसके बाद S6 में कह रहा है द ओल्ड मैन रिप्लाइड. ऑब्वियसली सेंटेंस नंबर आर इज अ क्वेश्चन और S6 में वो रिप्लाई कर रहा है. तो दिस R and S6 is a compulsory pair. So I'll eliminate D. I'm left out with 3 options. What should be the order? Okay. An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the world. उसके बाद क्या P आ सकता है? But one day when he turned 80 years old, an incredible thing happened. But क्यों लिखोगे आप? Okay. क्यों कह रहा है the whole village, which means P cannot come first. I'll remove A also.
क्यों कह रहा है? द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड. सो इसका रीजन बताया जा रहा है क्यों में. द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम. क्या एस पहले आ सकता है? ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, ही वॉज वन ऑफ मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड. एस में कह रहे हैं इंस्टेंटली एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द रूमर. डजंट मेक सेंस. सो क्यों से शुरू हो सकता है, सीक्वेंस को पढ़ के देख लो. द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड. उसके बाद क्यू के बाद क्या आ रहा है? पी. बट वन डे व्हेन ही टर्न्ड 80 years old, an incredible thing happened. What happened? Instantly, everyone started hearing the rumor that the old man was happy that day. सबको ये सुनने में आया अचानक कि वो ओल्ड मैन जो है वो बहुत खुश था उस दिन. So that was the incredible thing that happened that day. Okay. उसके बाद R. The whole village gathered together. The old man was asked what happened to him. Then the old man replied, nothing special. 80 years I've been chasing happiness and it was useless. And then I decided to live without happiness and just enjoy life. That's what I'm happy now. Okay, कितना अच्छा यहाँ पे आपको एक lesson भी है. Okay, if you stay happy, if you enjoy life, okay, if you leave everything apart, you can actually enjoy life, and that's how you can be happy as well. So yes, the correct answer is C. कई लोगों ने सही आंसर दिया. Next question for you. Here goes. Read it carefully. Let me know the answer. Again, S1, S6 fixed नहीं है, सारे sentences jumbled है. Read and answer carefully, guys. इसमें क्या होना चाहिए? Okay, good to see your answers. You are able to figure out, it seems. R कह रहा है anything you do gives you some form of regular exercise. Anything you do that gives you some form of regular exercise will benefit your heart. You can combine this with enjoyment, then it's even better. R के बाद आना चाहिए P. In fact, never choose a sport just because it is good for you. RP. And S, you will soon get bored of it, but do not push too hard. Tune into the warning signals from your body. RPS. Lastly, by all means, work up a good sweat and even a thirst perhaps. मतलब इसलिए मत चूज करो that it is good for your body. इसलिए चूज करो कि उसमें आपको इंटरेस्ट है. अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा दिन तक उस स्पोर्ट को खेलोगे and you'll actually exercise. स्पोर्ट के थ्रू you'll get a good exercise. Okay, you'll work up a good sweat का वही मतलब हुआ. Okay, so yes, the correct answer is C, R, P, S, Q. कई लोगों ने आंसर दिया. Well done, people. Okay, analysis के बारे में बता दूं guys. Tomorrow at 3 p.m. we will give you the recorded accurate analysis of the CDS English section. मैं कोशिश करूंगा बाकी पेपर्स के भी आंसर्स की अपलोड कर दूं. जनरल स्टडीज़ का पेपर संदीप बंसल सर शाम में 9 बजे लाइव सेशन में लेके आएंगे अपने उनके चैनल पर. ठीक है, हम आपको इंग्लिश का रिकॉर्डेड सेशन देंगे. लाइव सेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एट द सेम टाइम रैंडम क्वेश्चंस आने लगते हैं और सबका क्वेश्चन एड्रेस करने में बहुत घंटे निकल जाते हैं.
सो हम टू द पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशंस आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे. दैट विल प्रीमियर एट 3 PM टुमारो. ओके, सो फटाफट देख के आप भी फ्री हो जाना. ऑब्वियसली पेपर देख के आप थके रहते हो, तो आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाए, इसलिए. ओके, इसको हम कहते हैं वर्ड रीअरेंजमेंट. अभी तक जो हमने करा दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें आपके पूरे पूरे पैराग्राफ थे एंड द एंटायर पैराग्राफ इज जम्बल्ड. ओके, एंटायर पैराग्राफ इज जम्बल्ड और आपको फुल सेंटेंसेस को रीअरेंज करना पड़ता था. ये क्वेश्चंस में क्या है, एक ही सेंटेंस होता है जो 5 पार्ट्स में जम्बल्ड होता है या 4 पार्ट्स में. यू हैव टू रीअरेंज देम एंड पुट देम इन ऑर्डर. सो सेम चीज है, ABCD चारों जम्बल्ड है. सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर, सोच समझ के बताओ. मैं देखता हूं गोविंद क्या किया जा सकता है. ऑब्वियसली बिल्कुल चिंता मत करिए, आज बिल्कुल पढ़ाई मत करिएगा. जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट. लास्ट मिनट स्टडी तक करना कोई फायदेमंद नहीं होता. सो इस सेशन के बाद आराम से रिलैक्स योर माइंड, गो आउट, थोड़ा बहुत घूम के आइए, रिलैक्स करिए, रिफ्रेश योरसेल्फ. कल एकदम शांत दिमाग से जाइएगा. ट्रस्ट मी, योर पेपर विल बी रियली, यू विल एक्चुअली गिव योर पेपर रियली वेल. सो इसलिए यू विल टेक योर पेपर वेल. सो आराम से आज एक दिन के लिए आराम करिए एंड गो विथ अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. ट्रस्ट मी, यू विल परफॉर्म वेरी वेल. ओके, इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए? मोस्ट ऑफ यू आर राइट फॉर दिस वन. द करेक्ट आंसर इज D, CADB इज द वन. ओके, he has experienced, इसी से शुरू होगा. he has experienced what? both the sweet taste of success and the bitterness of defeat. CADB is absolutely right. 10 क्वेश्चन आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको वर्ड रीअरेंजमेंट से आते हैं. सो वर्ड रीअरेंजमेंट में तो 10 आउट ऑफ 10 करना बहुत आसान है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 10 में से एटलीस्ट 7 भी स्कोर करोगे ना, दैट्स अ गुड इनफ स्कोर. सो बिल्कुल चिंता मत करिए. Okay, next question, here goes. ध्यान से पढ़ो. Tell me what should be the order. आरती, ऐसा कुछ भी नहीं है. We are just here to actually teach you people and ensure that you people do well in your exams. We are not here to actually compete with anyone. है ना? If you do well, obviously, you should compete with yourself. Okay? Absolutely MKS. That's what you should do. Okay, इसका ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए. Guys, focus on the question. People, focus on the question for now. We'll see what can be done. Okay. Very good. Most of you are right. C is absolutely the one. PRSQ. You start with this. There is a small hotel on the where? On the summit for the convenience of tourists, especially those anxious to witness the sunrise. Absolutely, PRSQ is the one. C जिसने भी कहा बिल्कुल सही थे. Very good. Next question for you. Here goes. Try to identify that fragment with which the sentence should start. उस fragment को identify करिए जिससे वो sentence start होना चाहिए. जैसे and in so rubbed, क्या P से शुरू हो सकता है? And से तो sentence शुरू नहीं करता. At last he clasped his hands in prayer. इससे शुरू हो सकता है. क्या इससे शुरू हो सकता है? R से had forgotten to take from him. इससे भी नहीं शुरू होगा. The ring which the magician. Yes, S से शुरू हो सकता है. So you're sure that the sequence can start with either S or it can start with Q.
एस या क्यू से शुरू हो सकता है. एस तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्यू तो ऑप्शन में है, पी और आर से शुरू नहीं होगा, तो आई एलिमिनेट बी एंड डी. मैंने देख लिया पी एंड आर से शुरू नहीं हो सकता, तो आई हैव एलिमिनेटेड बी एंड डी, है कि नहीं. सो आई एम श्योर इट विल शुड स्टार्ट विथ क्यू ओनली, विच इज एट लास्ट ही क्लैस्प हिज हैंड्स. तो कौन सा होना चाहिए ए एंड सी के बीच में? व्हाट शुड बी द आंसर? The correct answer is A. QPSR is the one. At last he clasped his hands in prayer, and in doing so, and in doing so होना चाहिए, and doing so rubbed the ring which the magician had forgotten to take from him. So QPSR is the one. Whosoever said A was right. Well done. Got it? Very good. Next question for you. Here goes. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड टेल मी व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर दिस वन. Yes, Srishti, your comments are visible to all of us. Try refreshing your screen. Probably you can see everyone's comments then. Clasp का क्या मीनिंग होगा बताइए. What does clasp mean? Clasp का मतलब होता है पकड़ना. Clasping hands कुछ इस प्रकार से होता है. Clasp. What should be the order for this one? Okay, I've got several answers. Absolutely, the correct answer is B. QSPR is the one. Amber and Ava decided. Decided what? Decided to practice their parts for. Decided to practice their parts for the play, so that they would be ready for Saturday's big performance. QSPR is the one. Very good. Okay. Next question. Here goes. बताइए व्हाट शुड बी द ऑर्डर. अगेन मैं बार बार कहता हूं, पहले सेंटेंस या पहले फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे तो इट रियली बिकम्स इजी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. क्या होना चाहिए बताओ. Okay, very good. Most of you are right. SRQP is the one. Macs and iPads have what? More versatile software and typically larger screens and keyboards. Faster processing speeds than iPhones. Better to use and. यहाँ पे and होता तो ज़्यादा better रहता, but still उसके नहीं भी लिखोगे तो यही sequence होना चाहिए. So SRQP, whosoever said that was right. अब आते हैं ज़रा हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को करते हैं. लेट्स अटेम्प्ट अ फ्यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. सबसे पहले आप सभी को पता है व्हाट यू नीड टू डू. Read the passage carefully and then we will answer the questions. Start reading the passage and then we will answer the questions. Should I read the passage out to you? क्या मैं आपके लिए पैसेज पढ़ दूं या आप खुद से पैसेज पढ़ना चाहोगे? Quickly read. I think you should read it on your own. Okay.
ऑब्वियसली एग्जाम में मैं तो बैठा नहीं रहूँगा, को खुद से पढ़ के समझना है, एंड देन वी विल स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। ओके, खुद से पढ़िए। जस्ट नॉर्मल रीडिंग वुड नॉट डू, ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। रीड एंड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट मैटर्स। आंसर पे बाद में आइएगा, पहले पैसेज पढ़ के समझिए, and let me know whether you understood the passage or not. In order to make your job easy guys, कई बार आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, 2-3 क्वेश्चंस आप फटाफट पढ़ लिया पैसेज को, पैसेज का, और उसके बाद आप पैसेज को जब आप पढ़ते हो, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये आइडिया होता है कि पैसेज में कौन से जगह पे उसका आंसर छुपा हुआ है। सो यस, यू कैन रीड द क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया, देन यू रीड द पैसेज, you would be in a better position to answer. Done? You read the passage? Okay, I'll quickly read it and come to the questions then. It says, the South Indian Liberal Federation, also referred to as the Justice Party, may be alien to the present day generation. How many thinkers and intellectuals know that the Justice Party was a progressive movement that introduced women's suffrage in April 1921 in the then Madras province? How many of those who fight for women's rights now are aware that the Devadasi system was abolished by the Justice Party government, which was formed in 1920? A political party in the opposition was so vociferously opposed. Vociferously मतलब जो जोर जोर से बहुत ही अपने वॉइस को मतलब खुला रखते हैं अपने वॉइस को और विरोध करके बताते हैं कि ये सही है या गलत है. They vociferously opposed to this idea that its distinguished members indulged in a war of words with social reformer, women's rights activist and writer Dr. Muthulakshmi Reddy in the Legislative Council. But the brave lady and a firm Justice Party had the last word. So it's a pretty easy one, not very difficult to understand. Okay, so question पे आते हैं. As given in the passage, Devdasi system was what? Prevalent in Madras and abolished by Justice Party government, a tradition prevalent in North India, ancient philosophy or wisdom, a revolutionary idea of women education. What should be the answer to this question? Should be a simple one for you. Read, understand and answer. Okay, and most of the times in your CDS exams आपको बहुत easy passages मिलते हैं in which you are asked explicit questions, as in जो चीज़ passage में mentioned है clear वही question पूछा जाता है. So yes, most of you have already answered. A is correct. Prevalent in Madras and abolished by Justice Party government is correct. Well done. Next question. It says the word synonymous to the underlined word, a political party in the opposition was so vociferously opposed to this idea is synonym. टेंडर, क्वाइट, ट्रैंक्विल और वेहेमेंट. 4 ऑप्शंस. क्या होना चाहिए बताओ. द अंडरलाइंड वर्ड इज वॉसिफरसली. इसका आपको बताना है सिनोनिम. इट इज नॉट अंडरलाइंड. मैंने आपको बता दिया कौन सा वर्ड वहां पे अंडरलाइंड है. व्हाट शुड बी द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड? vociferously opposed का मतलब ही होता है they strongly opposed. Okay, they strongly opposed. So yes, indeed the correct answer is D. Most of you are right. Vehemently opposed. Tender, quiet, tranquil ये सब antonyms होंगे, याद रखिएगा. Vehement will be the synonym, which is they strongly opposed. Vehemently का मतलब भी होता है strongly, showing strong opposition about something. You are opposed about something. Okay, next one. Here goes. Which party introduced women's suffrage in Madras? That's the question.
विच पार्टी इंट्रोड्यूस्ड विमेन सफरेज इन मद्रास? मैं जरा सा वीडियो हटा देता हूं ताकि आप सारे ऑप्शंस देख पाओ. Okay, option A says the South Indian Federal Federation, also known as Liberal Party. The South Indian Liberal Federation, also known as Justice Party, started the progressive movement to abolish Devdasi system. National Democratic Alliance, also known as Janata Party, a United Progressive Alliance. What should be the answer? गाइस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पिछले कुछ सीजन्स में सीडीएस में आए नहीं हैं. हालांकि सिलेबस में तो है बट कुछ सीजन्स में आए नहीं हैं, तो उम्मीद है कि शायद इस सीजन में भी आए ना. बट स्टिल अगर आते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो चीज़ें भी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो बताया ही नहीं. ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू कैन इजीली सॉल्व देम. Okay, most of you have already given me the answer. Yes, B is the correct answer. The South Indian Liberal Federation, also known as Justice Party. Okay, abolished by Justice Party government, which was formed in 1920. ठीक है? So, yes, you're absolutely right. Just started the progressive movement to abolish Devdasi system, clearly mentioned in the passage. Next question, here goes. Appropriate title to the passage. According to the passage, what can be the best title for the passage? याद रखना, title should always be the one that focuses on the entire passage as a whole. Title हमेशा उसको select करोगे जो पूरे के पूरे passage को focus करे, किसी part पे focus ना करे. So, Justice Party, the torch bearer of reform, abolishing the Devdasi system, introducing women's suffrage, or Dr. Muthulakshmi Reddy, the real reformer. What should be the answer? निधि, टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आफ्टर द सेशन यू कैन ज्वाइन इट. ओके, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्या होना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइटल, बताओ. व्हाट डज इट टॉक अबाउट? Okay, the correct answer to this question should be A. Justice Party, the torch bearer of reform. यही एक ऐसा टाइटल है जो पूरे के पूरे पैसेज पे फोकस करता है. बाकी abolishing the Devdasi system is just a part of the passage. Introducing women's suffrage, okay, that is again a part of the passage. Dr. Muthulakshmi Reddy, उनके बारे में तो छोटा सा लास्ट में लिखा गया है. So, you always select the title that focuses on the entire passage. पूरे passage पे focus करना चाहिए. So, that's only one, which is Justice Party, the torchbearer of reform, because the entire passage talks about it. Okay. Next question कह रहा है, ध्यान से देखिए. I'll remove my video again for a few seconds. It says, who were indulged in war of words regarding abolition of the Devdasi system? Justice Party and local activists, opposition party and the national leader of the Justice Party, the distinguished members of the then opposition party and the social reformer, women's rights activist and writer Dr. Muthulakshmi Reddy, are victims of the Devdasi system and the Justice Party. बताओ, clearly mentioned. What should be the answer? सब लोग फटाफट पढ़ पढ़ के बता रहे हैं ना. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो, बट ट्राई टू रिटेन एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. ओके, ताकि आपको बार बार पैसेज पे न जाना पड़े, क्योंकि बार बार पैसेज पे जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल बी वेस्टिंग टाइम. So if you retain information, that's good. 2-3 बार आप जा सकते हो for random questions if you don't remember. Even if you go back to the passage to read and come back to the question, please ensure that you do it quickly. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं इस चक्कर में. So yes, the correct answer is C. It's clearly mentioned. The distinguished members of the then opposition party and the social reformer, women's rights activist and writer Dr. Muthulakshmi Reddy is clearly mentioned. यहाँ से यहाँ तक.
Okay. So before I move on, again आपको बता दूं, there is a special live batch which we are about to start for the CDS 2023 exams. उसकी तैयारी जो भी कर रहे हैं, they can join this course for CDS 2023. We are starting the batch on the 12th of September 2022 and the batch will end on the 15th of February 2023, well before the CDS 1 2023 exam. Okay, the cost of this is 7,500, but initially you're getting a discount of 4,999 here. Okay, so if you're preparing for that, you can enroll. This is a live course. हमारे recorded courses already है, but ये एक live batch है जो start होने वाला है आप लोगों के demand के कारण. इसमें विनोद सर और मैं दोनों ही पढ़ाएंगे. Okay, आगे बढ़ते हैं. And before I move on, you all must be aware of Sandeep Sir. If you are not aware, okay, he actually takes current affairs and general studies. Okay, do download this app which is Team Nishtha. Okay, these are his qualifications and he's been a faculty for quite many years now. Okay, here are his handles. Please follow him, download his app and follow him on his YouTube channel. He comes regularly at 9 PM with current affairs as well. So उनके channel को भी subscribe कर लीजिए and click on the bell icon for notifications. People who haven't subscribed to this channel, please do it right away and click on the bell icon for notifications as well. अब आते हैं अगले passage पे. इसको फटाफट पढ़ो. Start reading and then we'll move on to the questions. जल्दी जल्दी से करेंगे guys. Will not take much time in reading comprehension questions. Start reading everyone. I'll give you 2 minutes only. 5:07 हो रहा है. 5:09 पे हम डिस्कशन शुरू कर देंगे. 2 minutes to read this. Why 2 minutes? Because you have to read and understand. पढ़ लिया सबने? Okay, very good. I quickly read it and move on to the questions. It says the function of journalism is to collect, communicate and comment on the news, the day-to-day events of public interest that take place in our lives. The news can be communicated in many ways. It may be printed in newspapers, newsletters, magazines for use at a time and place of the reader's choice. It may be read or told by reporters over radio and television. Television broadcasts. It may be transmitted over news wires and computer networks. Sometimes the news is conveyed by means of images such as photographs and cartoons. The professionals who take part in collecting, writing, editing and reporting news in the media are known as journalists. They include reporters, writers, photographers and camera operators, editors, commentators, analysts, graphic artists and designers. Journalism in action is actually the process of telling as many people as possible. Guess what happened today? Many journalists are in constant race to keep track of what is going on in their towns, their states, their countries and the world. Breaking news is the term used for stories about things that are happening fast, things that people look to journalists to tell them about.
So that's the passage, pretty simple. Let's move on to the questions. अभी मैं जरा वीडियो ऑन कर लेता हूँ. Here is the first question of the second passage. What is the function of journalism? To get into people's personal zone, to take information, to collect, communicate and comment on the news, to click pictures of celebrity or to print anything what they want. Okay, some options are kind of sarcastic for the present media channels. Yeah, you could say that. What should be the correct answer? What is the function of journalism? Guys, remember कि you always have to answer in context of the passage. Okay, there is a possibility that the present media does all of these things. Possibility है कि आज का मीडिया सारी चीज़ें करता हो. But you always have to answer in context of the passage only. So what should be the answer? Yes, it's clearly mentioned. Very well done. Yes, to collect, communicate and comment on the news. It's clearly mentioned in the passage. Very good. Okay. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. You already have the passage here. Here's the next question. One of the main requirements for a journalist is to respect everyone, exploit a situation, edit articles, have a good nose for news. क्या होना चाहिए बताओ? हैव अ गुड नोज फॉर न्यूज़ मतलब उनको सूंघ सूंघ के पहुंच जाना चाहिए कि कहाँ पे हमें अच्छी ताज़ा गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है. दैट्स हैविंग अ गुड नोज फॉर न्यूज़. सो द करेक्ट आंसर शुड बी डी इंडीड. One of the main requirements for a journalist is to have a good nose for news. So yes, D is the correct answer. Okay. Next question. Before I move on to the next question, बता दूं recorded आपका analysis कल 3 बजे English section का आपका analysis यहाँ पे प्रीमियर होगा आपके अपने English फंडा चैनल पे. Detailed analysis होगा बट वो recorded form में होगा. ओके, सो फटाफट देख लीजिएगा ताकि आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाए. द एनालिसिस विल बी एक्यूरेट इन दिस चैनल. इसके अलावा विल ट्राई टू अपलोड द आंसर कीज फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. 9 बजे संदीप सर जनरल स्टडीज के सारे आंसर्स के एनालिसिस करेंगे अपने चैनल पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज एबिलिटी टू राइट, सर्च फॉर न्यूज, एबिलिटी टू रीड और रेस्पेक्ट फॉर ट्रूथ. क्या होना चाहिए? The ethics of journalism is, again you have to answer in context of the passage. अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी अकल नहीं लगाओ, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करो. एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, एथिक्स का मतलब आपको पता है? The ethics of journalism is D, which is the moral values. A journalist should always respect truth. That is the ethics. Moral value is clearly again mentioned in the passage. Okay, so the ethics of journalism is respect for truth. वो कोई झूठ नहीं लिख सकता अपने आप को अपने TRP बढ़ाने के लिए. That's wrong. So the ethics of journalism is respect for truth. Next question. Here goes. Journalists should be thorough with what? The insight into human conditions, all the rules of writing, grammar and composition, or the news. 4 options. इसका आंसर क्या होगा बताइए?
A journalist should be thorough with, indeed, B, all the rules of writing. He should know how to write properly. Okay, so all the rules of writing he should be aware of. So the correct answer is B. He should be thorough with all the rules of writing. The B is right. Next question. What is the term used for stories about things are happening fast? Breaking news, broadcast, reporting, all of the above. 4 options. क्या होना चाहिए बताओ? Probably the easiest question of the lot. सभी क्वेश्चन में easiest शायद यही होगा अगर पैसेज को आप समझे हो तो एटलीस्ट एक नंबर तो आ ही जाएगा आपका, है ना? ओके, यस, इंडीड ए इज राइट. ब्रेकिंग न्यूज. ट्राई टू रिमेंबर द पैसेज गाइज, दैट्स द की. ओके, यू कैन गो 2 and 4th बार बार पैसेज देख के भी आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ट्राई टू डू इट क्विकली, दैट्स व्हाट मैटर्स. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि पैसेज पढ़ने के पहले कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लो. ओके, ट्राई टू रिमेंबर दोज क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग द पैसेज. अब बेटर पोजीशन में रहोगे उसके आंसर्स को सही देने के लिए. सो 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद पैसेज पढ़ा, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर विद एक्यूरेसी. अब आते हैं जरा क्लोज टेस्ट पे चलते हैं. इट सेज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन ईच ब्लैंक विद वर्ड्स चोजन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन. ओके, क्लोज टेस्ट आप सभी को पता होगा. क्लोज टेस्ट में you have several blanks, generally 5 या 6 blank का आपका passage आता है. You have to read the passage and select the appropriate option for each blank. So it says Army Air Corps pilots George Welch and Kenneth Taylor dashed the evening before the Pearl Harbor attack, attending a formal dance and playing poker dashed the wee hours of the morning. They were still sleeping dash their night of partying when they were dashed around 8 a.m. by the sound of exploding dash and machine gun fire. Not wanting to miss out dash a fight, the pair threw on their tuxedo pants and sped to Haleva airfield in Taylor's Buick. Taylor's Buick क्या है? It's General Motors की एक प्रकार की गाड़ी है. It's a kind of a car that is Taylor's Buick, which is by General Motors. It's an American brand. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि blanks are numbered. Okay, all the blanks are numbered. आपको हर एक blank के लिए 4 options दिया जाता है and you have to select the correct answer for each blank. So पहला कह रहा है Army Air Corps pilots George Welch and Kenneth Taylor dashed the evening before the Pearl Harbor attack. Prepared, spent, used, restrict. 4 options. Attending a formal dance and playing poker. क्या आना चाहिए बताओ? Comment your answers quickly, people. Towards the end of the passage, crocodile लिखा हुआ था कि breaking news ही है something which is something that people want to know, that is breaking news. Okay, एक बार passage को देख लीजिएगा. Watch the recorded session. Later you'll get to know where the answer lies. Okay, the correct answer is indeed B. Very good. Okay, George Welch and Kenneth Taylor spent the evening before the Pearl Harbor attack attending a formal dance and playing poker. Have you watched the movie Pearl Harbor, guys? It's a very good movie. आपको पता होगा, if you know the sequence of events of the Second World War, Pearl Harbor के बाद क्या हुआ था? It was a Japanese attack on American land. उसके बारे में एक मूवी है. अगर आप वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स के बारे में नहीं देखे हो तो there is a very good Netflix series, World War II in color. I don't know how many people have watched it. Do watch it. बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा and you can easily remember the sequence of events, जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है. So yes, spent is right. Second blank पे आते हैं. Spent the evening before the Pearl Harbor attack attending a formal dance and playing poker dash the wee hours of the morning. Over, before, unless, until. Wee hours क्या होता है?
What is wee hours? बिल्कुल गाइस, देखो विनोद सर ने आपको एक टोटका दोबारा दिया, अ टिप। पैसेज के आसपास के इंफॉर्मेशन को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो क्लियरली बताते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। सो इट रियली बिकम्स इजी फॉर यू टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। गाइस थिंक केयरफुली, थिंक केयरफुली। वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब एकदम जो सुबह का टाइम, भोर का टाइम होता है ना, सुबह होने से जस्ट पहले, जो हम डॉन कहते हैं, दैट इज वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। बिफोर, आर यू श्योर? ओके, यहां पे तो हमने कर दिया स्पेंट। स्पेंड द इवनिंग बिफोर द पर्ल हार्बर अटैक अटेंडिंग अ फॉर्मल डांस एंड प्लेइंग पोकर बिफोर द वी आवर्स। यू कैन नॉट से बिफोर द वी आवर्स। भोर के पहले तक, भोर के पहले तक नहीं, भोर तक, जब तक कि भोर नहीं हो गया, जब तक कि डॉन नहीं हो गया तब तक, जब तक कि नहीं, समय के अनुसार। तो क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज डी, अंटिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। यस, अंटिल द वी आवर्स। जो जिसने डी कहा वे सही थे गाइस, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, बी नहीं हो सकता। जब तक कि सुबह नहीं हो गया तब तक वो पार्टी कर रहे थे, डांस अटेंड कर रहे थे, पोकर खेलते वे गुजार रहे थे। सो यहां पे आपने लिख दिया अंटिल, अंटिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। आगे बढ़ते। दे वर स्टिल स्लीपिंग डैश देयर नाइट ऑफ पार्टिंग व्हेन दे वर डैश अराउंड 8 AM बाय द साउंड ऑफ एक्सप्लोडिंग डैश। ठीक है, तो ब्लैंक नंबर 3 पे हम देखते हैं। दे वर स्टिल स्लीपिंग डैश देयर नाइट ऑफ पार्टिंग। दे वर स्टिल स्लीपिंग ऑफ, ऑन, ओवर और एट, 4 ऑप्शंस। क्या होना चाहिए? ब्लैंक नंबर 3, जरा जोर लगाइए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये ब्लैंक्स, बट इसी लेवल का आपको एग्जाम में आएगा, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Okay, I'm getting mixed answers to this question. If you are doing something, अगर मैं कोई चीज़, मतलब अगर मान लीजिए हिस्ट्री का क्लास है और हिस्ट्री के क्लास में पीछे बेंच में बैठ के मैं सो ही रहा हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एक्चुअली स्लीपिंग ऑफ द क्लास। आई एम स्लीपिंग ऑफ, मैंने सो के पूरे क्लास को गंवा दिया, ठीक है, उस सेंस में। और यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है? दे वर स्टिल स्लीपिंग ऑफ देयर नाइट ऑफ पार्टिंग, मतलब पार्टी करके वो टायर्ड थे और उस टायर्डनेस के कारण दे वर स्लीपिंग ऑफ देयर नाइट ऑफ पार्टिंग। यही सब यूसेज की जब मैं बात करता हूँ गाइस, रेगुलर रीडिंग हैबिट से ये सब यूसेज आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और ऐसे आंसर्स आप आसानी से कर सकते हो। सो दे वर स्टिल स्लीपिंग ऑफ देयर नाइट ऑफ पार्टिंग व्हेन दे वर डैश अराउंड 8 AM, when they were dash around 8 AM by the sound of exploding dash. When they were dash around 8 AM, arisen, awoke, awakened, risen. 4 options. क्या होना चाहिए? Blank number 4. Blank number 4 का बताइए। Okay. They were partying when they were dash around 8 AM. When they were awakened. Absolutely. जब उनकी नींद खुल गई, when they were awakened by the sound of exploding dash. उनकी नींद खुल गई. Awakened is absolutely right. मैं मेजरली सभी लोगों ने सही आंसर दिया। इसके बाद ब्लैंक नंबर 5. By the sound of exploding dash in machine gun fire.
Wars, bombs, fires, tanks. 4 options. Pretty simple one again. क्या होना चाहिए blank number 5 में? Okay, absolutely. Pretty simple. Exploding bombs and machine gun fire. They were awakened around 8 a.m. by the sound of exploding bombs and machine gun fire. Not wanting. Okay, before I move on, guys, bata दूं, there is a special batch starting on the 12th of September and ending on 15th of February. Okay, this is a live batch for the CDS exams, CDS 2023 paper. If you're wanting to prepare, you can enroll. The link is there in the description. Okay, blank number 6 की मैं बात करता हूँ. Not wanting to miss out dash a fight, the pair threw on their tuxedo pants and sped to Halaiva airfield in Taylor's Buick. Not wanting to miss out dash a fight, on, at, to or for. Preposition usage. क्या होना चाहिए बताओ? What should be the answer to blank number 6, guys? Not wanting to miss out. Miss out on, guys. That is right. अगर आप कोई चीज I missed out on your party last week. I missed out on your party. मतलब मैं तुम्हारा पार्टी मिस कर गया. तो हमेशा miss on something मतलब कोई चीज आप skip कर दिए या आप नहीं attend कर पाए, तो that is missed out. So they did not want to miss out on a fight. Not wanting to miss out on a fight, the pair threw on their tuxedo pants. Tuxedo pants को फटाफट पहना और फटाफट they hurried to the Halaiva airfield in Taylor's Buick. कार में फटाफट वो एयरफील्ड की तरफ गए जहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी. So yes, D is the answer. A is the answer to this one. Next, cloze test passage. Many charities are working on creating dash supplies of clean water at grassroots dash for different communities around the world. And this dash work needs to continue and to dash. But the fundamental problem of increasing demand for a limited source can only be dashed by more efficient use of water, especially in industry and agriculture. Wastewater recycling, capturing rainwater, and more efficient irrigation techniques and reforestation are all examples of how water can be used more dash. Okay, tuxedo आपको पता है आरती, tuxedo is a kind of a coat and suit जो पहनते हैं. Okay, tuxedo suit होता है, coat suit के तरह होता है. और tuxedo pants जिसमें उन्होंने कोट को नहीं पहना, उन्होंने बस tuxedo के pants को पहना and they rushed off to the airfield. That's what it means. वो सूट का जो पैंट है, सूट एंड पैंट जो होता है, सूट का बस पैंट पहन के वो भागे. दैट्स द मीनिंग. ओके, नेक्स्ट पैसेज पे आ गए हैं हम. पहला ब्लैंक बताओ, ब्लैंक नंबर 7. Many charities are working on creating dash supplies of clean water at grassroots. Refreshing, reusable, sustainable, attainable. क्या होना चाहिए बताइए? Many charities are working on creating dash supplies of clean water. Okay, some of you are right, I can see that. Okay, sustainable means something which can go on and on without depleting. Okay, that is sustainable. So yes, C is correct. Many charities are working on creating sustainable supplies.
सस्टेनेबल सप्लाईज मतलब ऐसा सप्लाईज ऑफ वाटर जो चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो। हम लोग कई सारे रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाता, लेकिन हमें ऐसे ऑप्शंस देखना है, कई चैरिटीज़ ऐसे ऑप्शंस देख रहे हैं जो सस्टेनेबल ये सप्लाईज ऑफ क्लीन वाटर बनाए, तो दैट्स द मीनिंग। ओके, नाउ रिफ्रेशिंग मतलब तरोताज़ा, फ्रेश हो जाना। रीयूजेबल जिसे दोबारा यूज़ किया जा सके। अटेनेबल दैट विच कैन बी अचीव्ड, दैट इज अटेनेबल। तो वो सारे फिट नहीं बैठेंगे, सी इज द आंसर। ब्लैंक नंबर 8 पे देखते हैं। सस्टेनेबल सप्लाईज ऑफ क्लीन वाटर एट ग्रास रूट्स डैश फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। कैपेसिटी, बेस, क्लास और लेवल। ब्लैंक नंबर 8। पानी रीयूजेबल नहीं हो सकता आरती। पानी ऑब्वियसली एक बार यूज कर लिए तो खराब हो जाएगा, तो दैट इज नॉट रीयूजेबल। ओके, वो नेचुरल प्रोसेसेस से सस्टेनेबल हो सकता है। ओके, इसमें क्या आना चाहिए? ब्लैंक नंबर 8। ग्रास रूट्स व्हाट? Very good. Some of you are right. Grassroots level. At grassroots level, supplies of clean water at grassroots level for different communities around the world. एकदम basic level, एकदम scratch से. So many charities are working on creating sustainable supplies of clean water at grassroots levels for different communities around the world. So D is the answer. Blank number 9 पे आते हैं. Around the world, and this dash work needs to continue. Important, gorgeous, formidable और leading. क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शंस। सबके मीनिंग समझोगे तो आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, गॉर्जियस मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, गुड लुकिंग, दैट इज गॉर्जियस। ओके, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, दैट इज फॉर्मिडेबल। ओके, फॉर्मिडेबल का मतलब समथिंग विच इज दैट विच इंस्पायर्स फियर इन यू, जिसे देख के आपको डर लगे, दैट इज फॉर्मिडेबल। ओके, एंड चौथा ऑप्शन जो है लीडिंग, मतलब जो आगे से लीड करता हो, दैट इज लीडिंग। सो करेक्ट आंसर टू दिस ब्लैंक शुड बी ए, इंपॉर्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, एंड दिस इंपॉर्टेंट वर्क नीड्स टू कंटिन्यू, एंड दिस इंपॉर्टेंट वर्क नीड्स टू कंटिन्यू। फॉर्मिडेबल का मीनिंग समझो विप्रजीत। फॉर्मिडेबल कहाँ से आएगा? फॉर्मिडेबल मीन्स सम दैट विच inspires, that which brings fear in you. Okay, that which inspires fear in you, that is formidable. तो वो फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। it is an important work, sustainable resources create करना, that is an important work, and needs to continue to dash, acclaim, expand, grand or influence. Needs to continue and to dash, needs to continue and to dash, acclaim, expand, grand or influence. बताओ क्या आना चाहिए इसमें? फटाफट, ब्लैंक नंबर 10 गाइस, एवरीवन। जितना प्रैक्टिस किए हो उस हिसाब से मुझे लग रहा है यू ऑल शुड इजीली क्लियर द कट ऑफ, नॉट अ बिग डील। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। कंटिन्यू एंड टू एक्सपैंड, कंटिन्यू एंड टू एक्सपैंड, सो बी इज एब्सोल्युटली राइट। बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, but the fundamental problem of increasing demand for limited resource can only be dashed by more efficient use of water. Can only be dash, understood, meet, addressed or known. 4 options. क्या होना चाहिए बताइए? Can only be? Okay,
सम ऑफ योर राइट कैन ओनली बी एड्रेस्ड. एड्रेस मतलब उस प्रॉब्लम को देख के उसका सोल्यूशन लेना, दैट इज एड्रेस्ड. ओके, यहां पे मीट लिखा है, मी के बाद मीट नहीं आ सकता, बी मेट हो सकता था, MET. ओके, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम, you always address a problem or a difficulty, you always address, identify karna and try to take steps to solve them. But the fundamental problem of increasing demand for limited source can only be addressed by more efficient use of water, especially in industry and agriculture. Wastewater recycling, capturing rainwater, and more efficient irrigation techniques and reforestation are all examples of how water can be used more dash. Confront, remit, approach efficiently. 4 options should be the easiest of the lot. क्या होना चाहिए बताओ? Okay, absolutely D is correct. Okay, can be used more efficiently. Okay, so ये हो गए आपके कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन. अब हम एक रैपिड फायर सिनोनिम और एंटोनिम लेके चलेंगे. इट विल बी काइंड ऑफ अ रैपिड फायर सिनोनिम एंड एंटोनिम क्वेश्चंस. बढ़ते हैं आगे. D is the answer to this one. Select the most appropriate synonym for the given word. Okay, last 20 questions guys. 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, एंड देन यू आर फ्री फॉर द डे. उसके बाद आराम करिए, रिफ्रेश योर माइंड्स, गो विद अ फ्री माइंड, ट्रस्ट मी, यू विल डू वेरी वेल. हॉस्पिटेबल का सिनोनिम क्या होना चाहिए? अनग्रेटफुल, कॉर्डियल, अनफ्रेंडली और रूड. 4 ऑप्शंस. जल्दी जल्दी बताओ. एब्सोल्युटली. हॉस्पिटेबल मीन्स कॉर्डियल. Hospitable means cordial, warm, friendly. Cordial, warm, friendly, that is hospitable. Ungrateful मतलब जो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार नहीं हो, that is ungrateful. Unfriendly इसका एंटोनिम हो जाएगा. Rude भी kind of एंटोनिम हो जाएगा. The synonym of hospitable will be cordial. Okay, B is absolutely right. Okay, there is a analysis recorded at 3 PM. विनोद सर ने ऑलरेडी बताया. कल 3 बजे that will premiere on the English Funda channel. Please ensure that you watch it. Okay, next question. Synonym for the word inducement: audacious, incentive, timid or strict. 4 options. जल्दी जल्दी बताइए. Inducement का synonym क्या हो सकता है? Synonyms, yes, not antonyms. Comment your answers quickly. Inducement is indeed an incentive. Inducement is something which is given to motivate. Okay, incentives क्यों दिया जाता है? कोई अच्छा परफॉर्म करता है, incentives are given to that person. It's a kind of an inducement which actually improves the performance. Audacious का मतलब होता है very bold और brave. Timid का मतलब होता है very shy, introvert kind of timid. Okay, strict का मतलब होता है one who is inflexible, is a strict person. सख्त जिसे कहते हैं, that is strict. Okay, next. Leisurely का synonym: relaxed, least, lopsided, lustful. 4 options. जल्दी बताओ. Synonym of leisurely. Leisurely का सिनोनिम क्या होगा? Absolutely, relaxed. Leisurely means relaxed. Lease मतलब to rent out something for several years. किसी चीज़ को rent out, कोई प्रॉपर्टी को rent out कर दिया गया है तो that's on lease. Lopsided मतलब थोड़ा सा जो टेढ़ा हो. Okay, something which is inclined, that is lopsided. And lustful means filled with lust, that is lustful. Next question, synonym of upright: honorable, horizontal, humble or supine. 4 options. जल्दी से बताओ.
Yeah, one side is lower than the other, that is lopsided. Yes, Pratna, you're right. That's kind of inclined only, hai ki nahi? Okay, what should be the answer to this one? Upright का synonym होना चाहिए. A, honorable is correct. One who is honorable, extremely respected and honest is upright. Horizontal का मतलब होता है सीधा. Humble का मतलब होता है kind of modest, one who is not very proud is humble. Supine means something which is very weak and prone to attacks, that is supine. अगला क्वेश्चन है रैम्बल. रैम्बल का सिनोनिम, नॉट कंफ्यूज, वॉन्डर और वंडर. 4 ऑप्शंस. रैम्बल का मीनिंग बताओ. सिनोनिम ऑफ रैम्बल. ओके, रैम्बल का मतलब होता है टू रोम अबाउट, ऐसे ही घूमना फिरना. ओके, दैट इज रैम्बल. सो करेक्ट आंसर इज सी. रैम्बल एक्चुअली मीन्स टू वॉन्डर. नॉट का मतलब होता है गांठ बांध देना, दैट इज नॉट. इफ यू टाई अ रोप एंड नॉट इट, गांठ बांधते हो, दैट इज नॉट. कंफ्यूज का मतलब तो आप जानते होगे. वंडर का मतलब गहरी सोच में पड़ जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग्रेंट का मतलब वाइब्रेंट, ग्लेयरिंग, विशियस और प्लेजेंट. क्या होना चाहिए बताओ. फ्लैग्रेंट, इट इज अ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ द पॉलिसी. फ्लैग्रेंट ब्रीच का मतलब ग्लेयरिंग, समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस एंड समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज फ्लैग्रेंट. ओके, समथिंग विच इज ब्लेटेंट. ओके, समथिंग विच इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, दैट इज फ्लैग्रेंट. सो बी इज करेक्ट. वाइब्रेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ब्राइट. विशियस का मतलब होता है क्रूअल, एक्सट्रीमली विकेड. प्लेजेंट का मतलब होता है सैटिस्फाइंग, संतुष्ट करने वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन सिनोनिम बताना है आपको. द पॉलिसी वुड एंटेल अ मैनिफोल्ड इंक्रीज इन द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ व्हीकल्स ओल्डर देन 15 ईयर्स. एंटेल का सिनोनिम, फीबल, सैलुब्रियस, इम्प्लाई और होलसम. 4 ऑप्शंस. क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी जल्दी गाइस. You should be able to answer such questions in seconds. Okay, the correct answer of entail is imply. Entail mean, it would mean, in fact, इसका मतलब ये है, the policy would mean a manifold increase in the renewal of registration fees of vehicles older than 15 years. So it would mean, it would imply that. Feeble का मतलब होता है very weak. Salubrious इसी का एंटोनिम है फीबल का, which means very healthy. Wholesome means something that contains all the nutritional values, that is wholesome. पूरी तरीके से सारे जिसके good effects हों, that is wholesome. Next question. Instead of digging in on the heels of obstinacy, the government should listen. Obstinacy का synonym क्या होगा? Swindler, stubbornness, bestowed, fraudster. 4 options. ऑब्स्टिनेट का मतलब आप जानते हो. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ढीठ, जो बिल्कुल ही ढीठ हो, इनफ्लेक्सिबल सा हो, दैट इज ऑब्स्टिनेसी. सो करेक्ट आंसर इज बी. स्टबर्ननेस इज राइट. स्टबर्ननेस शुड बी द सिनोनिम. स्विंडलर होता है फ्रॉड, ठग जिसे कहते हैं, जो चीट करने वाला, दैट्स अ स्विंडलर. बेस्टोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइडेड, दैट इज बेस्टोर्ड. फ्रॉडस्टर और स्विंडलर एक तरह से सिनोनिम ही है. फ्रॉडस्टर इज अ सिनोनिम ऑफ स्विंडलर. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज द विक्टिम, इसका आंसर ऑलरेडी आ गया यहाँ पे. इफ अ पर्सन इज द विक्टिम ऑफ हॉरिबल परसिक्यूशन, विल दैट परसिक्यूशन विल बी रेंडर्ड इमटेरियल. रेंडर्ड का ऑलरेडी मीनिंग दिया हुआ है, इम्पार्टेड, विच विल बी प्रोवाइडेड अगेन. सो डी इज द आंसर. बाकियों के भी मीनिंग बता दूं. फॉलेशियस मीन्स
a mistaken belief, galat manyata. Forthright means something which is blunt and straightforward, that is forthright. Reasonable, that makes sense or logic, that is reasonable. Okay. Next question. The Italian Jews devoted themselves with ardor to the service of the state. Ardor का synonym provision, avidity, elaboration, assurance. 4 ऑप्शन बताओ. जल्दी से गाइस. इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग बेस्ड ऑन एंटोनिम्स. अगर आप कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपको वोकैब में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. एलिमिनेशन ट्रिक पे अगर आप 50% भी स्कोर करके आते हो सिनोनिम एंटोनिम में, काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा. डू नॉट वरी एट ऑल. फ्री माइंड से जाइए एंड यू विल डू वेरी वेल. Ardor is very right. Avidity is right. Avidity means a desire to do things. So Italian Jews devoted themselves ardor to the service of the state. They wanted to serve the state. So avidity is right. Provision means to provide for something. Provide से provision शब्द आया है. Elaboration का मतलब विस्तार करना. Assurance का मतलब होता है दिलासा देना. That is assurance. Okay, let's come to some antonyms here. Choose the antonym for the given word. Last 10 questions, फटाफट बताइए. Debilitating antonym. Prompt, tentative, restorative or pleased. 4 options. बताओ. Debilitating मतलब जर्जर, जो धीरे धीरे खराब होता रहा. That is debilitating, something which is gradually deteriorating or something which is gradually getting worse. Okay, so the antonym should be restorative. C is absolutely right. Sabka josh high hai, all the best guys, you will do very well in your exams and sure about that. So debilitating का antonym होगा restorative. Prompt का मतलब doing something without wasting time. Okay, immediate. Prompt means immediate, तुरंत. Tentative means something that has been planned, that is being planned, but that is not finalized yet. कोई ऐसी चीज जो प्लान किया जा रहा है but finalize नहीं किया जा रहा है. Pleased means satisfied, that is pleased. So correct antonym for debilitating is restorative. Next, antonym for the given word. Exude का antonym. Absorb, urgent, oily or stingy. 4 options. बताइए. एक्सूड का मतलब होता है एक प्रकार से रिलीज करना और गिव ऑफ. ही एक्सूड्स कॉन्फिडेंस, मतलब उसे देख के लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है. सो एंटोनिम क्या होना चाहिए बताओ. आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने. एंटोनिम, यस इंडीड ए. एब्जॉर्ब शुड बी द एंटोनिम फॉर दिस वन. अर्जेंट का मतलब that which requires immediate attention. That which requires immediate attention is urgent. Oily मतलब तेल से लथपथ, that is oily. और stingy का मतलब होता है कंजूस, miserly, that is stingy. So antonym क्या होगा? A. Exude का antonym है absorb. Next question. Antonym for the given word upkeep. Upkeep का antonym बताओ. Waver, destruction, modest or enforce. नहीं, exodus is a different word आदि. Exodus का मतलब होता है mass migration, that is exodus. ओके, इसका बताओ. अपकीप का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना. मेंटेनेंस बोल सकते हो. मेंटेनेंस. सो एंटोनिम क्या होगा? डिस्ट्रक्शन. एब्सोल्युटली, सम ऑफ यू वर राइट विद दिस. वेवर का मतलब होता है समथिंग विच इज अनस्टेबल, दैट कीप्स मूविंग, दैट इज वेवर. जो हिलता रहे, दैट इज वेवर. ओके. मॉडेस्ट का मतलब अगेन हम्बल, नॉट बीइंग वेरी प्राउड और एरोगेंट, इज अ मॉडेस्ट पर्सन.
इन्फोर्स का मतलब इम्पोज, कोई चीज जोर जबरदस्ती करना, उसको फॉलो करने के लिए, दैट इज एनफोर्स और इम्पोज. सो डी इज द, उसका डी का मीनिंग वो है. सो एंटोनिम अपकीप का होगा डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेवन का एंटोनिम बताओ. स्टॉलवर्ट, रिलीज, डिस्टिंग्विश और कंफर्टेबल. 4 ऑप्शन. क्रेवन का मतलब आप जानते हो, क्रेवन का एक्चुअली में मतलब होता है कावर्डली, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, डरपोक. फेंट हार्टेड या चिकन हार्टेड जिसे कहते हैं, फेंट हार्टेड या चिकन हार्टेड जिसे कहते हैं, दैट्स अ पर्सन हु इज अ क्रेवन. सो एंटोनिम क्या होना चाहिए? द एंटोनिम शुड बी ए, विच इज अ स्टॉलवर्ट. स्टॉलवर्ट इज अ पर्सन हु इज ब्रेव, हु इज कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग. ठीक है. सो रिलीज का मतलब जानते हो, डिस्टिंग्विश्ड इज समवन हु इज वेरी फेमस, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लॉर्ड. कंफर्टेबल यू ऑलरेडी नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेट का एंटोनिम बताओ. व्हाट शुड बी द एंटोनिम ऑफ एक्सेलरेट? Stalwart is one who is confident and brave about something. Tamanna, that is a stalwart. Accelerate का मतलब होता है किसी चीज में तेजी लाना. To speed up a process, that is accelerate. तो एंटोनिम क्या होना चाहिए? The antonym of accelerate should be delay. To slow down. Delay का मतलब होता है slow down something. Risk you already know. Monitor means to administer, to keep a watch. डिनाई मतलब किसी चीज को मना कर देना. ओके, नेक्स्ट, बेम्यूज का मतलब बताओ. डिप्रेस, इंस्पायर, क्लैरिफाई, सॉरी एंटोनिम बताओ. डिप्रेस, इंस्पायर, क्लैरिफाई और डिजायर. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेम्यूज? बेम्यूज का मतलब बेसिकली समझोगे तो एंटोनिम आपको समझ में आएगा. बेम्यूज मीन्स कंफ्यूज. सो एंटोनिम क्या होगा? द एंटोनिम इज सी, क्लैरिफाई इज करेक्ट. डिप्रेस मीन्स टू बिकम सैड. इंस्पायर मीन्स टू बी मोटिवेटेड. डिजायर किसी चीज को करने की चाहत. ओके, द वांटिंग टू डू समथिंग. ओके, नेक्स्ट, बिफोर आई मूव ऑन गाइस, संदीप सर आप जानते होंगे, उनका ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टीम निष्ठा. ही इज टेकिंग रेगुलर क्लासेस एट 9 PM. सो प्लीज अटेंड दोज क्लासेस विदाउट फेल. दीज आर हिज ऑफिशियल हैंडल्स on different social media channels. Okay, and we are starting a batch on the 12th of September. Okay, this is a live batch for people, for aspirants who are preparing for CDS 2023. So you can join this batch, which is starting on the 12th of September. Here is the course fees. This is a live batch which will be taken by Vinod sir and me. All right, next question. Antonym for the word contorted. Contorted का antonym faultless, straight, secret और cripple. Contorted मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, something which is twisted. Okay, contorted means something which is twisted, that is contorted. So antonym क्या होना चाहिए? Not done yet. Last 3 questions guys. इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चंस. ओके, कॉन्टॉर्टेड का मतलब ट्विस्टेड. सो एंटोनिम क्या होगा? बी, स्ट्रेट इज द एंटोनिम. फॉल्टलेस, नॉट हैविंग एनी फॉल्ट. सीक्रेट मतलब गुप्त. क्रिपल मतलब जो लंगड़ा लंगड़ा के चले, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, दैट इज क्रिपल. नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली इज क्रिपल. नेक्स्ट, एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड. रैस्पी का एंटोनिम स्क्रैची, मेलो, क्रैक्ड और हस्की. रैस्पी का मीनिंग क्या होता है? रैस्पी का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी स्क्रैची. ओके, समथिंग विच इज हार्श साउंडिंग, समथिंग विच इज जो सुनने में बहुत ही ज्यादा कैकोफोनियस लगे, नॉट वेरी प्लेजेंट टू हियर.
हार्श साउंडिंग. सो एंटोनिम होगा बी विच इज मेलो. मेलो का मतलब होता है सूदिंग, सूदिंग साउंड और सॉफ्ट साउंड, दैट इज मेलो. स्क्रैची, क्रैक्ड, हस्की, ये सारे इसी के सिनोनिम हो सकते हैं रैस्पी के. सो बी शुड बी दी एंटोनिम. नेक्स्ट, अबाउंड का एंटोनिम बताओ. रेस्ट, डिस्करेज, ब्लेस और ड्विंडल. अबाउंड का मतलब होता है कोई चीज भरा हुआ है, फिल्ड विथ. समथिंग विच इज फिल्ड विथ इज अबाउंड. सो एंटोनिम क्या होगा? Antonym will be dwindle. Dwindle means declining in number. Something which is decreasing in number, जो number में कम होता जा रहा है, that is dwindle. Abound मतलब filled with. Rest का मतलब जानते हो, discourage का मतलब भी आप जानते होगे, demotivate करना. Bless मतलब आशीर्वाद देना. Finally, the last question of the day. Antonym of submissive: domineering, compliant, intricate or progressive. Antonym of submissive. Submissive का मतलब क्या होता है? One who is obedient, जो बहुत ही कोई भी बात बिना क्वेश्चन किए मान लेता हो, बहुत ही झुक के चलता हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों की बात, कोई भी उसे कुछ भी कहे मान लेता हो, दैट इज सबमिसिव, बीइंग वेरी ओबीडियंट. सो एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होना चाहिए ए विच इज डोमिनियरिंग. Domineering means authoritative, showing command over someone or something. So ये इसका एंटोनिम हो गया. Compliant अगर बोलोगे तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा. Intricate मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बारीकी से किया गया हो, बहुत केयरफुली किया गया हो, that is intricate. And progressive का मतलब जो डे बाय डे बेटर होता जा रहा है, that is progressive. Progressive का एंटोनिम होता है regressive. So progressive, something which is getting better day by day. So finally, that was the last question of the day. I hope you enjoyed the session. Do hit the like button, thumbs up if you liked the session. और भी स्टूडेंट्स को बताइए इन सेशन के बारे, जो आगे के CDS एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बताइए. एंड फॉर पीपल हु आर टेकिंग द एग्जाम्स टुमारो, ऑल द बेस्ट. जैसे मैंने कहा, रिलैक्स फॉर टुडे. कल भी रिलैक्स करिए, अभी किताब छूना बंद करिए. लास्ट मोमेंट स्टडीज़ कभी फ़ायदेमंद नहीं होता. लीव द बुक्स, गो आउट फॉर अ वॉक, रिलैक्स योर सेल्फ, गो टू द पार्क, एन्जॉय योर सेल्फ. वापस आइए, कल एक खुले दिमाग से पेपर देने जाइए एंड ट्रस्ट मी, यू विल डू वेरी वेल. एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस में हम मिलेंगे. ऑब्वियसली वो रिकॉर्डेड सेशन होगा, लेकिन उस रिकॉर्डेड सेशन के बाद मैं लाइव आऊँगा आपके एक्सपीरियंस को पूछने के लिए कि पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा. That will just be a one-on-one session जहाँ पे आपसे बातें करेंगे YouTube के चैनल पर. ठीक है? सो कल 3 बजे आपका एनालिसिस रेडी हो जाएगा, प्रीमियर होगा इंग्लिश का, और 9 बजे संदीप सर जनरल स्टडीज़ का लेके आएंगे. सो ऑल द बेस्ट पीपल. आई एम श्योर यू पीपल विल डू वेल. ओके, एंड रिलैक्स योर माइंड, गो विथ अ फ्री माइंड, डू नॉट बिकम नर्वस. ओके, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू एंड ट्रस्ट मी, यू विल डू वेरी वेल. ठीक है? टेंशन ज़्यादा होता है तभी मामला बिगड़ता है. सो गो विथ अ फ्री माइंड, जो होगा दिखा जाएगा. गो विथ अ फ्री माइंड, ट्रस्ट मी, यू विल डू वेरी वेल. ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू लेटर. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.